Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are going to practice previous year question for NVS PGT teacher for the subject English. We have already practiced the question of 2019 and now we are practicing the question of 2016 and this is our second class. So अगर आप लोगों ने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, then the link is given in the description box. We have already started a new course for NVS PGT English. In this course, we provide daily 3 to 4 recorded classes. We provide live doubt solving sessions and revision classes. In this course, we provide MCQ and PDFs. So if you want to get 5% more off, then use my coupon code, that is Prerna05. Now coming to the topic, that is question number 131. I am the monarch of dash. Which of the following phrases completes the above line? ये जो है I am the monarch of dash. Which of the following phrases completes the above lines? So these lines are taken from All I Survey. तो ये जो All I Survey है, ये जो लिखी थी, ये कविता विलियम कूपर ने लिखी थी एंड इन्होंने किसके लिए लिखी थी? It contained a poem entitled Verses Supposed to be Written by Alexander Selkirk, right? तो ये जो था, apparently the English poet William Cooper was author of the familiar saying, I am the monarch of all I survey. In that particular verbal gap, in 1782, Cooper published his first volume of verse. It contained a poem entitled Verses Supposed to be Written by Alexander Selkirk, right? तो ये किसने लिखी थी? These lines are just given by William Cooper. Now coming to question number 132, that is Shaw, यानी कि G.B. Shaw, in some of his plays was inspired by dash philosophy of life force. तो ये जो G.B. Shaw थे, he was inspired by whose philosophy? क्या वो कार्ल मार्क्स की फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे? क्या वो रूसो की फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे? क्या वो बर्डसन की फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे? या फिर वो वोल्टेयर की फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे? सो द आंसर विल बी कार्ल मार्क्स. तो यहाँ पे क्या होगा? Shaw, यानी कि G.B. Shaw, in some of his plays was inspired by Karl Marx's philosophy of life force. Now coming to question number 133. In Browning's poem, Andrea del Sarto, dash is the protagonist's wife. ये जो ब्राउनिंग है, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोयम है, एंड्रिया डेल सार्टो, डैश इज द प्रोटैगोनिस्ट वाइफ, मतलब वाइफ कौन थी? सो आंसर होगा ल्यूक्रेजिया. आंसर क्या होगा? ल्यूक्रेजिया. दैट इज Andrea del Sarto, also called The Faultless Painter, is a poem by Robert Browning published in his 1855 poetry collection Men and Women. It's a dramatic monologue and a form of poetry for which he is famous, about the Italian painter Andrea del Sarto. So it's one of the famous poem by Robert Browning in his collection, that is Men and Women. It is a dramatic monologue and a form of poetry for which he is famous, about the Italian painter Andrea del Sarto. Now coming to question number 134, that is the term negative capability. ये जो term है negative capability was used by, किसके द्वारा ये term use किया गया था? शेली के द्वारा या कीट्स के द्वारा या मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा या फिर टेनिसन के द्वारा? So the answer will be John Keats. Now let's see. Keats coined the term negative capability in a letter he wrote to his brothers George and Tom in 1817. Inspired by Shakespeare's works, he describes it as being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. तो ये जो term है, ये जॉन कीट्स ने कॉइन किया था in a letter, right? Simple, in a letter to his brother George and Tom, right? And वो inspired थे विलियम शेक्सपियर से, right? So now coming to question number 135, that is Shelley's most scandalous poem
इन द ओपिनियन ऑफ टेलीग्राफ वॉज, जो शेली की सबसे स्कैंडेलियस पोएम थी वो थी द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम. According to Telegraph, Shelley's most scandalous poem in the opinion of Telegraph was The Revolt of Islam. Now coming to question number 136, that is W.B. Yeats lays emphasis on ceremony and custom in his poem Sailing to Byzantium, The Tower, या Among School Children, या फिर A Prayer for My Daughter. मैंने कल जैसे आप लोगों को बताया कि ये पीजीटी वाले, एनवीएस पीजीटी वाले, ये क्या करते हैं ना कि ये जस्ट आप लोगों को सारे वर्क सेम लेटर के देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट आप लोगों को इससे पता करना है कि ये जो लाइंस है एंड ये जो उन्होंने कहा है वो किस अपने कौन से वर्क में कहा है, राइट. सो द आंसर विल बी अ प्रेयर फॉर माय डॉटर. W.B. Yeats lays emphasis on ceremony and custom in his poem A Prayer for My Daughter. A Prayer for My Daughter by William Butler Yeats speaks about the poet's family. It demonstrates his concern and anxiety over the future well-being and prospects of his daughter Annie. Right? A Prayer for My Daughter by William Butler Yeats speaks about the poet's family. It demonstrates his concern and anxiety over the future well-being and prospects of his daughter Annie. Right? So, यहाँ पे आंसर क्या होगा? A Prayer for My Daughter. Mary Crawford and Fanny Price, two orphans, are characters in Jane Austen's Pride and Prejudice, Emma, या Mansfield Park, या फिर Persuasion. So the answer will be Mansfield Park. And Mansfield Park के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि Mansfield Park में आखिर है क्या. Mansfield Park is the third published novel by Jane Austen. First published in 1814 by Thomas Egerton. A second edition was published in 1816 by John Murray. Still within Austen's life. Simple में Mansfield Park is the third published novel by Jane Austen. Simply आप लोगों को याद रखना है. And sometimes exam में पूछे जाते हैं कि first publish किसने किया था. Then 1840 में Thomas Egerton ने publish किया था and second edition was published in 1860 by John Murray. So basically ना आपके syllabus में थॉमस एगर्टन एंड जॉन मरे नहीं है. दैट्स व्हाई दे वोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट. आप सिंपल जेन ऑस्टिन में फोकस कीजिए. अगर आप और भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं देन यू कैन फोकस ऑन थॉमस एगर्टन एंड जॉन मरे, राइट. सो अगर सिर्फ एनवीएस पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो जेन ऑस्टिन काफी है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 138, दैट इज ह्यूमन नेचर इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट बट ब्लैक एंड ग्रे was described by Dash in his novels. Option है Thomas Hardy, Graham Greene, Henry James या H. Rider Haggard. So the answer will be Graham Greene. आंसर होगा Graham Greene. इन्होंने The Lost Childhood में ये बताया था. इन्होंने The Lost Childhood में इसको अपने में डिस्क्राइब किया था दैट ह्यूमन नेचर इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट बट ब्लैक एंड ग्रे, राइट. ये नॉवेल यहाँ पे नहीं होगा. द लॉस्ट चाइल्डहुड इट्स एन एसे बाय ग्राहम ग्रीन, राइट. आप लोग याद रखिएगा इट्स एन एसे. इट्स नॉट अ नॉवेल बट इट्स एन एसे, राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 139, दैट इज शॉक यानी जीबी शॉ क्वेश्चंस द ऑथोरिटी ऑफ द चर्च एंड द बैरन्स इन. किस वर्क में अपने वो ये क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि चर्च की ऑथोरिटी एंड द बैलेंस पे वो क्वेश्चन उठाते हैं अपने कौन से वर्क में. क्या वो मैन एंड सुपरमैन है, क्या वो सेंट जॉन है, क्या वो कैंडिडा है या फिर आर्म्स एंड द मैन है. सो द आंसर विल बी सेंट जॉन, राइट. द आंसर विल बी सेंट जॉन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 140, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain is mentioned in Dash of Thomas Hardy. Happiness is but an occasional episode in the general drama of pain is mentioned in The Mayor of Casterbridge या फिर Test of the
अर्बरविल्स या फिर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड या फिर जूड द ऑब्सक्योर. What will be the answer? The answer will be the mayor of Casterbridge. What will be the answer? The answer will be mayor of Casterbridge. So now coming to the mayor of Casterbridge. The mayor of Casterbridge या फिर the life and death of a man of character बोल सकते हैं. The mayor of Casterbridge को क्या हम लोग बोल सकते हैं? The life and death of a man of character is an 1886 novel by English author Thomas Hardy, one of Hardy's Wessex novels. It is set in a fictional rural England with Casterbridge standing in for Dorchester in Dorset, where the author spent his childhood. अगर आप मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की कहानी पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आपको इमोशनल लगेगी. स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बुरी लगेगी कि ये कैसे जो मेन कैरेक्टर है वो ऐसा काम क्यों करता है, बट अगर आप इस कहानी को पढ़िएगा देन आपको ये बहुत इमोशनल लगेगी. ये बहुत ही अच्छा वर्क है थॉमस हार्डी का. जस्ट गो थ्रू दिस वर्क एंड यू विल जस्ट लव दिस वर्क ऑफ थॉमस हार्डी. उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस वर्क को रिप्रेजेंट किया है. राइट, नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन. जस्ट हमने आज क्या पढ़ा, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन. आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्व. I am just completing this line that I am the monarch of all I survey. किसने दिया था ये लाइन्स? विलियम कूपर ने. क्वेश्चन नंबर 132 में जीबी शॉ जो थे वो कार्ल मार्क्स की फिलोसफी से इंस्पायर्ड थे. लाइफ फोर्स जो था उनका, फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स कार्ल मार्क्स का, उससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे. क्वेश्चन नंबर 133 में आते हैं. इन ब्राउनिंग्स पोएम एंड्रिया डेल साटो, ल्यूक्रेजिया is the protagonist's wife. The answer will be Lucrezia. The term negative capability was used by John Keats. Right? Shelley's most scandalous poem, in the opinion of Telegraph, was The Revolt of Islam. W.B. Yeats lays emphasis on ceremony and custom in his poem A Prayer for My Daughter. Right? A Prayer for My Daughter. Mary Crawford and Fanny Price, two orphans, are characters in Jane Austen's Mansfield Park. The answer will be Mansfield Park. Human nature is not black and white, but black and grey was described by Graham Greene in his essay The Lost Childhood. Question number 139 में आते हैं. G.B. Shaw questions the authority of the church and the barons in Saint John. The answer will be Saint John. And the last question, that is, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain is mentioned in The Mayor of Casterbridge of Thomas Hardy. So आज हमने 10 questions complete कर लिए and that's all for today. अगर आपने अभी तक हमारे courses में enroll नहीं किया है then enroll it as soon as possible. That's all for today. Thank you so much for watching. Meet you in the next class.